नहीं, आई डोंट नो हाउ टू लाइक, वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन वैसे होते हैं ऐसे किसी तो हाय, ऐसे कर देना, हाय आशु, हम जैसे हैं, वो ऐसे ही रहेगा. हम ऐसे हाँ. ही हैं. So, I mean, we have Ashuji today, have been closely working, come discussing, come ideating a lot of things from last 1.5, 2 years, I think. ऑलमोस्ट है ना? या 2 साल से मिल दो गया. साल हो गए. We started our journey like back in 15. Didn't know कि market कैसी थी. 15 में catalog start किया. फोटो शूट करो भाई, ई कॉमर्स आ रहा है एंड ऑल दैट, एंड स्टार्टेड कैटलॉग शूट्स एंड ऑल दैट. 17 में एक प्लेटफॉर्म मिला. 2017 आई रिमेंबर दिस क्लाइंट कॉल मी अप सेइंग दैट एक कैंपेन करना है. तो आइडिया नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी. तो क्लाइंट ने बोला कि बजट बना के दिखाओ. तो वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लाइक बिकॉज 2 साल 2.5 साल तक हमने स्टूडियो में बैठ के ई कॉमर्स शूट कैटलॉग्स किए, जो जो क्लाइंट्स आए, लुक बुक्स थोड़े मोटे किए. एंड कैंपेन हैज अ वेरी मल्टी डिफरेंट ट्रीटमेंट. आई मीन, एज पर द ब्रीफ, आपके टेबल पे एक ब्रीफ आता है, कैंपेन का एग्जीक्यूशन है, और उसके अकॉर्डिंग एक फोटोग्राफर चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, स्टाइलिस्ट चाहिए, जो हमें नहीं पता था. ऑब्वियसली. तो क्लाइंट ने बोला कि बजट दो, और हमने उसको 5-10 मिनट में बजट बना के दे दिया. तो क्लाइंट बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता. मैंने बोला क्यों? बोला कि ऑप्शन क्या है, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट जो इन हाउस है. एंड देन ही वाज द क्लाइंट टॉट मी कि यार भाई ऐसे कैंपेन्स नहीं होते. एक फोटोग्राफर है, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक स्टाइलिस्ट है, एक आर्ट डायरेक्टर है, तो इनके 3-3 प्रोफाइल्स मंगा मार्केट्स, एंड वी डिडंट नो एनीबॉडी. एंड रिमेंबर लाइक किसी मॉडल के थ्रू बोला कि यार वो फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर है, ये स्टाइलिस्ट है, इनसे बात करो. तो उनकी कॉस्टिंग जब ली, तो इट वाज बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू एब्जॉर्ब. यार हम वो डाइजेस्ट छोटे, नहीं हो रही. हाँ नहीं मतलब 6 डिजिट फिगर देना एक फोटोग्राफर को, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लाइक नहीं, समझ नहीं आया था, मार्केट नहीं पता था. ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी वर नॉट अवेयर बैक इन दोज डेज. But Touchwood client was good. Started the career like that. 17 में we produced the first campaign. सेम क्लाइंट के लिए दूसरा कैंपेन हमने 2018 जनवरी में, उसी क्लाइंट के लिए 6 महीने के बाद. सिंस यू नो लाइक फैशन इज लाइक समथिंग, स्प्रिंग समर हुआ और फिर ऑटम विंटर हुआ. मेजरली प्रिंट टाइम्स में यही होता था. अभी तो डिजिटल हैज चेंज कंप्लीटली. इट्स मोर ऑफ कैप्सूल कलेक्शंस एंड द मोर ऑफ द मंथली लॉन्चेस एंड ऑल दैट. बट दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. तो when I met you, and when I saw the trajectory, the whole curve thing of yours, कि यार माय गॉड, जब मैं पैदा नहीं होता तब से तो आप काम करे. वो दूसरी बात है, ये 16 साल के बड़े यंग है ये फैक्ट है. बट क्या, सो आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे ये सारा हुआ. I still remember Dhananjay, one day you came and, from coming from the tech background and then getting into the, I got your personality. You're somebody who's excited about new things and you wanted to do something and you will take a challenge. I'll resolve it. And you used one word. You said, "I'm an accidental producer." Yeah, I still believe And that. I think since अब तो हैं production institutes वगैरह हैं. At one time, anybody who's there, I think all of us were accidental producers. Yes. और इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड तो उस टाइम तो प्रोड्यूसर भी नहीं बोलते थे, कोऑर्डिनेटर बोलते थे. हमें पता भी नहीं था कि प्रोड्यूसर. तो मेरी तो जर्नी 16 साल का हूँ, बट 91 92 के आसपास विद टू ऑफ फेमस फ्रेंड्स ऑफ माइन, वो एक प्रपोजल लेके आए कि हम जो है मॉडल्स का, अगर हम जो लोग मॉडलिंग करना चाहते हैं उनका अगर हम फोलियो बनाएं तो हमारे को एक फोलियो पे इतने पैसे बच सकते हैं. आई डोंट वांट टू पुट द नंबर एंड नेम राइट नाउ. दे नो आई एम टॉकिंग अबाउट देम. आई गिव अ चैलेंज कि जाओ यार, ये पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू अर्न 1500 रुपये कमा के दिखा दो मेरे को, Right. एंड देन विल टॉक अबाउट इट. एंड दे एक्चुअली डिड. ओके, 1500 के वो 2500 रुपये लेके मेरे पास आ गए, कहते ये देख हमने. मुझे लगा कि यार अगर किसी भी जगह पे आप 1 रुपये भी कमा सकते हो तो फिर आप और भी उससे कमा सकते हो. एंड देन आई ऑल्सो गॉट कि यार सिंस मेरे फादर वाज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आप एक सरकारी क्लास वन ऑफिसर के हाँ बैठे हो, तो बिजनेस, और एक इंटेंशन थी कि अपना काम करना है. वो प्रॉब्लम हमारे साथ थी, किसी और की इंस्ट्रक्शन लेने में हमेशा प्रॉब्लम थी. And then I started with them. We started brainstorming, knowing the market, and we started with model coordination. ऑफिस नहीं था हमारे पास. अशोक विहार में एक ऑफिस था छोटा सा, उसके बाद वो दोनों पार्ट हुए तो हमारे पास ऑफिस भी नहीं था, फिर एक फ्लैट ली. देयर वाज स्ट्रगल एंड वी यूज्ड टू गो. फिजिकल थी उस टाइम पे, आपको
प्रिंट इकट्ठे होने थे। अब हमारा ना नाम है ना ऑफिस है, तो हमें कोई पिक्चर देने आता नहीं था, और आना भी चाहे तो कहाँ आएगा। तो वी यूज टू गो एंड कलेक्ट उस टाइम के जितने भी टॉप, आप वो समुद्र में सेलिब्रिटी ना हो, राइट। जितने उनके जाके, और वो पिक्चर्स देते हुए भी ना उनको लगता था 2 ही सेट ले ले यार, वो 3 प्रिंट को ये वाली छोड़ दे ना। तो यूजुअली जैसे आजकल हम देखते हैं कि मेल आ कार्ड गया, बना दिया, मेल कर दिया, उस टाइम पे एक मॉडल का पोर्टफोलियो बनाए, उसने वो 10-15 फोटो के मल्टीपल सेट मल्टीपल बनाए, सेट बनाए। और वो मल्टीपल क्लाइंट्स और प्रोडक्शन हाउसेस हाँ सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं कि भाई हाँ यही ले लो और हाँ, यही क्लाइंट को दिखा कोऑर्डिनेटर दो। वाज द वर्ड एट दैट कोऑर्डिनेटर्स, या टाइम, इंटरेस्टिंग। एंड स्टिल सम ऑफ देम आर हियर एंड बिग नेम्स, जो कोऑर्डिनेटर से आज हम भी प्रोड्यूसर हैं, वो भी प्रोड्यूसर हैं, कई वैनिश हो गए मार्केट से एज मार्केटर। वो लेके हमारी जर्नी शुरू हुई। देन यू नो one of our friend was interested in photography, so I went into photography. One was very good with business development and going and meeting. I was good with strategy planning, what to do, ये चाहिए नहीं चाहिए. We started working in the market. Then, like your client taught us, similarly, market taught us. मॉडल कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई, पिक्चर्स लेके जा रहे हैं, तो वी वर शूटिंग विद दादा, ले लेते हैं उसका नाम, तो एडिट कर देते ही इज अ पर्सनालिटी, आई लव हिज हैं। पर्सनालिटी। तो एट दैट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग। उस टाइम पे कुछ बहुत स्पेशली अभी फिल्म्स का ज़्यादा दिल्ली में ट्रेंड था नहीं, रहा भी होगा तो हमें पता नहीं। स्टिल शूट्स में प्रबुद्धो, आकाश दा, प्रदीप दा, परदेश जी, ऐसे कई नाम थे। तरुण भी शुरू हो गए थे उभरना, थोड़ा स्लाइटली बाद में आए तरुण बॉम्बे से। तो दादा के साथ एक कैंपेन कर रहे थे, तो उसमें वो ड्यूक को ना, ग्रेसी सिंह, तो हमने अपने मॉडल कोऑर्डिनेट कर दिए, फिर शूट देखने पहुंच गए। अशोका होटल में शूट हो रहा था, स्विमिंग पूल के साइड में। वो हम अपना सुबह वो 4-5 बजे हम अपना चल उठे, 7-8 बजे पहुंच गए। भाई मॉडल तो चेक कर लिए थे, पहुंच गए। शाइनी भी था उसमें, शाइनी। और बट उस टाइम के लिए, जैसे टुडे इज अ टाइम व्हेन एक एजेंसी है, एक कास्टिंग डायरेक्टर है, एक बुकिंग एजेंट है, डिटेल्स भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिया, जीपीएस कर दिया, और वो पहुंच गया। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, बैक इन 90s वो मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स वर नॉट इन द टाइम, तो हाउ द होल इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन प्लस रीचिंग एट द लोकेशन, लाइक वो इट मस्ट बी अ टास्क। यस इट वाज। एंड इनफैक्ट आई वाज टेलिंग यू कि ग्राउंड लाइन नहीं लगती थी। हम तो पीछे से जाके फ़ोन करते थे, फिर एक भाई साहब के घर फ़ोन आता था। फिर अगर वो किसी मॉडल ने फ़ोन नहीं उठाया या उसकी ग्राउंड लाइन ख़राब है, तो आपके पास उसका घर का एड्रेस होना चाहिए, ताकि आप टाइम पे उसके घर पहुंच जाओ और उसको लेके शूट पे पहुंच जाओ। राइट। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एट दैट टाइम टू फिगर आउट लोकेशन। परमिशंस लेने जाओ तो ये लोगों को ये नहीं पता था परमिशन जिसके पास, जो कौन देगा परमिशन। राइट। Okay. So, but it was very exciting. We could learn a lot. Like I was telling you कि उस शूट पे जब हम पहुंचे तो उन्होंने, दादा ने झाड़ दिया, तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा भाई साहब हमने क्या करना है, ये होटल में ये नहीं है, वो नहीं है। हमें तो नहीं पता। तो तब मैंने शायद पहली बार सुना था, तुम इसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। कह हमने तो मॉडल्स दिए, एक्टर्स दिए। देन दैट कैंपेन वाज गोइंग ऑन, एंड नेक्स्ट डे जब दूसरे दिन जा रहे थे, तो हमने कहा यार टाइम पे पहुंच जाते हैं, वरना पता फिर से झाड़ पड़ गई। सेकंड डे हम टाइम पे पहुंच गए, इंडिया गेट के आसपास शूट कर रहे थे। द सडन स्मॉल इंसिडेंट हैपेंड वेयर ही सेड दैट रजत मुखर्जी है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है आपको। तो वी आई स्टार्टेड लिसनिंग, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ओके देयर इज अ पार्ट व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देन वी वर डूइंग अ कैंपेन विद, उस टाइम पे उल्का होती थी, एफसीबी सिर्फ उल्का होती थी राजेंद्र प्लेस में 8th फ्लोर पे। तो वहाँ मॉडल्स हमारे सेलेक्टेड हैं, शूट होना है। अब वो शूट जो है वो नहीं हो रहा, तो हम थोड़े दिनों बाद चक्कर लगा लेते थे। पहुंच गए तो उसने, जो सर्विसिंग वाला बंदा था, कहता है यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, सब कुछ सेट है, क्लाइंट मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन प्रॉप्स ही नहीं मिल रहे। ना मुझे पता, ना मेरे भाई को पता, कि पता नहीं उसे पता रहा होता, मुझे तो नहीं पता था। मैंने भाई साहब प्रॉप्स क्या? कहता है यार प्रॉपर्टीज। मैंने कहा क्या चाहिए उसमें आपको? यार एक सेटअप है, उसमें ड्रेसिंग टेबल है, पीछे बेड है, फिर एक रूम है उसमें, ऐसा लिविंग है, फिर एक लैब है उसमें। मुझे लगा यार ये ऐसा तो
दिस नो रॉकेट साइंस, चीजें तो मिल सकती हैं। हाँ यार 2 दिन दे दो आप हमें, हम कर देते हैं ये चीजें। हाँ। मैं टोनी गए पंचकुला रोड, बात की अपने से, उस टाइम पे भी दिमाग लगा धनंजय, वो उसने बोला 2000, तो हमने बोला 2500, उसने बोला 2500, तो हमने बोला 3000, 1500 टेम्पो क्या जो अंडरस्टैंड। तो मतलब ऐसा तो होता नहीं था तब कि अब टर्न किया आप इतने में कर रहे हो, आप कितना करो, वो नहीं, अब वो उस टाइम पे था एक चीज का, पहुंच गए उसके पास, सब बता दिया। द ओनली थिंग वी वर नॉट एबल टू गेट वाज कारपेट, कारपेट रेंट पे मिल ही नहीं रहा था। 8,000 का कारपेट कौन खरीदेगा भाई। हमने कहा भैया कारपेट तो तुमको ही लेना पड़ेगा, रेंट पे नहीं मिलता। एंड देन समहाउ वी ऑल मैनेज्ड इट। और जब वो एस्टिमेट दिया गया तो उसने पूछा तुम प्रोडक्शन फीस कितनी लोगे। मतलब हमारे को तो मॉडल कोऑर्डिनेशन ही मिल रही, वही बहुत। अब ये तो बना लिया हमने पैसे, अब प्रोडक्शन। मैं कहा, भाई जो आप बोलो। एक अमाउंट बोला विच वाज प्रीटी हाई फॉर अस। ऐसा करो 15,000 रुपए दिन के डाल दो उस टाइम पे। उस टाइम। मैं कहा यार कारपेट भी खरीद ही सकते हैं। हाँ ठीक है भाई। एंड once you start working, you know, once you are into the market, once you're in the pool or in a sea, you will learn to swim. You have only 2 choices: swim or go down. Yeah. We were able to swim. And then there's a whole lot of fun, like I've seen you 17 से duck से एकदम you've grown like duck. I'm still You're still growing, I know. I'm still growing. I know. And एक टाइम आया ऐसा कि हमें लगा कि यार फिल्म्स के बजट्स नहीं होते थे। मैंने काम किया बजट नहीं होते थे, कम लगते थे हमें, बहुत बजट चले जाते बॉम्बे। स्टिल के बजट्स आने शुरू हो गए अच्छे, हमने उस पर बहुत फोकस किया। And then that was... I think that उसका एक रीजन ये भी होगा बिकॉज सी जो इन्फ्लक्स हुआ मीडिया का विद द कलर टीवी, लेट 90s में स्टार्ट हुआ, कलर टीवीज आने शुरू हो गए, चैनल्स आने शुरू हो गए, अदरवाइज दूरदर्शन यूज्ड टू हाँ you're right एंड प्रिंट वाज लाइक ह्यूज कि होर्डिंग लग रहा है, इंप्रेशंस है, और वो फिजिकल that was the necessity at that time. yeah I think that TVC was a luxury. yeah अगर उसका रीच भी कम था, टीवी कुछ घंटे शाम को चलता था। प्लस आई थिंक एक क्लाइंट को समझाना कि इतने सेकंड का एड चल रहा है, रन हो रहा है, तो उसके इंप्रेशंस कितने हैं, वो आई थिंक दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट बैक इन दोस डेज बिकॉज प्रिंट अगर 60 फीट का होर्डिंग लगा हुआ है आपके सामने और उसकी फैमिली में कोई देख रहा है, उसके एम्प्लॉय देख रहे हैं कि भैया हम उस हाईवे से आए थे, उस बाईपास से, तो दिखा, तो आई थिंक वो एक इम्पैक्ट रहता है साइकोलॉजिकल, तो उस पे खर्च उस टाइम पे ये था कि मूवी थिएटर में चल गई एड, एक वो होती थी, टीवी तो शाम को चलता था, कुछ घंटे आता था। तो आई बिलीव यू वेरी राइट कि उस टाइम पे ये था कि आपकी जो टू रीच आउट टू मासेस, प्रिंट वाज अ बिग मीडिया। इट इज स्टिल, बट इट इज जस्ट डाइवर्सिफाइड इनटू डिजिटल का इन्फ्लक्स बहुत हो गया, बहुत चेंज्ड बहुत जबरदस्त। like so if I talk about my career, फन शूट के अगर एग्जांपल लें, फन प्लस हसल लें, तो मेरा पहला ही शूट था। तो क्लाइंट ने मुझे समझाया कि यू आर डूइंग द प्रोडक्शन, यू आर अ प्रोड्यूसर, and one of my model coordinators taught me that you can hire a line producer. So like, what is this line producer? So we found a line producer through a reference. वो मेरा गंदा काटा था भाई दो उस टाइम पे, तो मैं ब्लैकलिस्टेड हिम। हाँ, मेरे को नाम भी पता है। बट उस शूट में बड़ी हसल हुई और फन भी था बिकॉज पहला असाइनमेंट था। तो आपकी जर्नी में ऐसा कौन सा एक असाइनमेंट, एक किस्सा हो जिसमें मतलब कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे इंडियन माइंडसेट होता है, जुगाड़ करके काम किया, एग्जीक्यूट किया? तो इनिशियली मोस्ट ऑफ थिंग्स वाज जुगाड़, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एबिलिटी टू टॉक टू पीपल, कन्विंस देम एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज। अगर आप फ्रेंडली रिलेशनशिप में जाके सही टाइमिंग को लेके इंटेग्रिटी में काम कर रहे हो और लेयर्स में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो, तो पीपल यूज टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड। डिफिकल्टीज हमने भी फेस की, जैसे बाय गॉड ग्रेस बहुत कम बार या बहुत ऐसी बार ऐसा हुआ कि
maybe it was we were destined to do things in a way. Challenges मैंने बहुत फेस किए, स्पेशली कुछ टाइम तो मेरे दिमाग में ये बन गया कि जिस जगह जिस सिटी या कंट्री में मैं फर्स्ट टाइम चाहता हूँ तो फर्स्ट टाइम मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है, विच लेटर ऑन आई ब्रोक. तो फर्स्ट बहुत पहले एक शूट था, उसमें सिगरेट कैंपेन होते थे उस टाइम पे, चांसलर का शूट था, अदेश जी शूट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस एजेंसी थी. तो एक मालवीय में रहता है फ्रेंड मॉडल, हम फार्म हाउस ढूंढ रहे थे. फार्म हाउसेस मतलब देयर वाज नो लोकेशन कोऑर्डिनेटर, लाइटमैन, ये कंसेप्ट नहीं था, स्पॉट का कंसेप्ट भी नहीं था. रहे लेकिन फिल्म सिटी नोएडा में थोड़े बहुत रहे, बट इट वाज नॉट वेरी. इक्विपमेंट हायरिंग के मतलब फिल्म इक्विपमेंट हायरिंग वाले थे, स्टिल के इक्विपमेंट हायरिंग वाला कोई नहीं था. तो क्योंकि वो लोकेशन कोऑर्डिनेशन वाला कोई था नहीं, तो उसने बोला मेरे दोस्त का फार्म है. एक भाई से बात करी, हम अपना फार्म हाउस और देखा है, पसंद आ गया. डिजिटल कैमरा में नहीं थे, पोलराइट से था, बताना ही पड़ता था ऐसा फार्म है, या वो खींचो हॉट शॉट से और प्रिंट करा और दिखा दीजिए ऐसा. तो पहुंच गए हम. वो एक भाई से परमिशन थी, दूसरे से नहीं थी, तो वी हैड अ प्रॉब्लम. वो मॉडल अपना गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है कमरे में, सब शूट रुक गया. उसको ही बुलाया वगैरह, भैया उनसे बात की. देन आई अंडरस्टूड वन थिंग, वो असाइनमेंट मुझे पता है उस दिन हमने रोका. नेक्स्ट फिर हम खुद गए फार्म हाउसेस पे, जाके डालना शुरू किया, ढूंढा अपने आप. फार्म हाउस के ओनर से बात की, सारी परमिशंस करने के बाद वी शॉट दैट अगेन. वी डिडंट चार्ज द एजेंसी एट दैट टाइम, एंड आई ऑफर्ड हरदेव जी की आपका जो डे का लॉस हुआ है, एंड ही वाज काइंड इनफ. बस उसी दिन शायद कंपनी बंद हो जाती. उसी लाइक, बट देन वी लर्नड, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू नो, कीपिंग थिंग्स इन इंटेग्रिटी, टेकिंग राइट काइंड ऑफ परमिशन. ऐसा नहीं है कि मैंने गोरिल्ला शूट नहीं की है, बट देन एवरीबडी वाज क्लियर, राइट फ्रॉम एजेंसी टू क्लाइंट, एवरीबडी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड वी वर वेरी क्लियर कि बॉस इस लोकेशन पे हम ये शूट करने वाले हैं. सो इफ एनीबडी हैज, लाइक लॉट ऑफ पीपल हैड प्रॉब्लम एट दैट टाइम, दे नेवर अलाउड सिगरेट्स और लिकर और एनीथिंग. वी नेवर लाइड. अगर उन्होंने नहीं दिया, लॉट ऑफ मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज एट दैट टाइम आल्सो, फोटोग्राफर्स, दे यूज्ड टू रिफ्यूज, मैं नहीं करूंगा ये वाला. अब तक करते हैं लोग कि जी मैं नहीं करता. We were generous enough to do anything which comes our way, but keeping that thing in integrity really worked for that long. And then over years you start learning, meeting people, creating. Now up to we have an industry now, like me and you both are together, and rest of the people also, you know, all producers, all photographers, they interact. I know there are some gaps in between, but everybody is interacting, supporting each other. If I need something, you need something, we all work out. The intention is that anybody who's coming here or wherever we are going for a shoot, they should have an extraordinary experience. Okay, wow. True. Good fun. True. Because see, I mean, when I see for myself, in a way, the graph has. See, firstly, it was never the intention. As yes, accidental producer, I came in this industry with a tech product. I wanted to change the market with tech products, like with zero knowledge of the industry, with nobody meeting from the industry. Like when I came in the market, I literally had. I had one connection, like as a model, and I stayed at his place. I'm humble, like I'm thankful enough that he let me stay at his place for like 2-3 weeks, and then, anyways, we started on our own and we were working on this thing. But the main agenda was okay, we'll build a tech product and we'll try to change the industry. But I realized I'm too early. We as a product, we were too early for the Indian market. So it was a social media network for photographers, makeup artists, stylist, art director. Plus, I still believe in that product. प्लस ये जो टर्म्स थी, इन टर्म्स के लोगों से मैं मिला नहीं था. मतलब मैंने गूगल किया था. आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ सर्च एंड वी गूगल दीज टर्म्स एंड वी सेड ओके, कम्युनिटी, this community consists of photographer, makeup artist, stylist, models, art director, creative director, cinematographer, like depending upon the project. And we started building. We were too early for the market. Tanked off. Same product got built. Same product got built in 19 in Paris. 6 years after that, now it's a hit. People use it, called Cherry Deck.
It's one of the platforms. And back in those days, at our times, Production Paradise was one of the platform, and a couple of other platforms were there. But it was more of an information. Uh, we were more of network. Like you engage. आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो तो आप किसी का पोस्ट को लाइक कर रहे हो या किसी को एम्ब्रेस कर रहे हो कि अच्छा शूट निकला है, अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. लाइक एंड होते होते 15 में स्टूडियो स्टार्ट किया, 17 में क्लाइंट taught us, as I said, producing content. The breakthrough for me was 18. The breakthrough was my same client, उसके साथ तीसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. So third project with the same client, and the shoot was with Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor. 2018, I'm very thankful to both the guys. Jagdish Banagiri was the VP of this brand called To Be Me, and Amit Ambekar was the CMO, I guess, for the whole group, the whole Spencer's group, RPG group. He was ex Domino's. I forgot the parent company name, but he was there in marketing, and then he became. And he like he called me once and like you shoot something like this and all that. I say I can do it and all that. But I will confess it today that the reality is ये मेरे सर पे तो नहीं आएगी ना. गिरेगा नहीं गिरेगा. Reality can hit you on head. So, and they'll let me do that celeb shoot. And that was the time, first, it was a breakthrough for my career in a way because you did a big celeb shoot with one of the good photographers, senior photographers from the industry in Mumbai. And second, I learned this new term called entourage. Okay, so the client is saying, where is the entourage? I remember like I was on a call with him and he's like, entourage kahan hai? Uska budget kahan hai? I'm like, what the hell? And then I googled entourage. While I was talking to him, I googled. Celebrity का पूरा उसका stylist. I did not know that. I was good in vocab, but I didn't know that what does entourage mean. So literally, while I'm talking to him, I remember I was shooting in this location in Gurgaon, and I googled entourage and I read the meaning and understanding. And I mean, that way I'm smart. Like I could gauge it what this entourage. You always had the advantage of Google. Okay? Yeah. We had nothing of that sort. So I googled it and I was like, but you have to tell me now what is the numbers like. And then he was like, yeah, but you have to ask me. Like, yeah, just tell me. And he gave me the contact of the managers and started calling and getting their celeb costing and all that. I was like, insane, man. It's insane. I mean, I don't want to comment on that, but did you ever, when we were picking and like your graph started picking 17, very quickly you moved into the mainstream. Did you ever felt jittery? Should I pick this up? Is it too big? Okay, so yes, it's a very important question because I personally love to live on the edge. Always. I always say that I love to bet everything. I always say that all chips in. You must have seen me in the last 1.5 years. I bet on a lot of projects. A lot of projects tank off, a lot of investments get fucked up badly. But I am like all chips in. डालो और फिर देखते हैं what's gonna go. But yeah, it's fun. But I think that was the reason because I still feel sometimes jittery about it. I take risk. No, I'm at a stage right now where I want peace of mind for my team. It's very important. Like I always say, like we have been in this business of studio rentals and all that. It does matter to me a lot how a client who is taking my rental service is behaving with my spot boy. Because that guy, to make that shoot happen seamlessly for him for 10 hours, that guy is working his ass off for like 14 hours. He's waking up early in the morning, he's getting everything ready for you. Speak decently to him. At least that's the least you can do as a human. So you got into, how did you started your studio rental and how that started with a studio rental? It was an experiment. I always just for my knowledge, after the tech product you did and there was a lot of valuation of it and whatever happened, then तो ये इस इंडस्ट्री में आने का थॉट कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम पोलियो के बारे. I'll tell you one thing. 15 first product got into it didn't work too early. 17 second product. It was a SaaS product connecting the modeling agencies, production houses, ad agencies back end में. Page an business school in Paris.
Had an office in Paris, which was very fancy. 2 साल तक office दिया था उन्होंने, November 17 से November 19 तक, which we never opened the doors of because I could not move to France. And Amazon France also did a funding of around $20,000 in backend integration, server management and everything. So it was good. Actually, that was a time when I said, ki, okay, I can't move to France. One, I hate learning languages. Like, I hate it. Matlab, I can do anything, but that's one of the flaws, I would say. I mean, I make peace with it. I cannot learn a language. And since one of my partners were living in Paris, he still lives in Paris. He was living in Paris back in those days. He's like, this is a country where you have to learn a language. You have to learn French to adopt to the whole system and be a part of it. I said, no, I can't do it. And okay, we moved to the complete thing. And then that was the time when we decided, no, now we will focus on content. We'll learn, we'll scale. 17, 18 का journey बता दिया, same client setting project. 19 was the biggest breakthrough because I happened to meet a client through one of my earlier DOPs who happened to know a person who made a call to somebody and the girl came over and she was handling coups back in those days. And she gave me a platform. She gave me a great platform. She helped me a lot. She taught me a lot. अच्छा, okay. So पहले तो client ने सिखाया कि production कैसे करते हैं, but she was the one who taught me that you can charge your fees separately. So she taught me that as a producer you have to charge your fee for a project. Otherwise it was like कि हाँ production fees इतनी है and all that, but as a producer what fees you are charging? She told me that you charge your fee because you are a part of the project, right? And 19 we did coups. I don't know, more than 12 projects in 9 months. First project happened on 5th or 6th of January 2019. And last project with them we did for on 5th September. 8 महीने में मोटा मोटी हमने इनके साथ कोई 10-12 बड़े campaigns के we did films, we did shoots. We learned a lot. We traveled to Goa on one of the assignments. We traveled to gym. We did a lot of outdoors and we were learning. We were hustlers. And that time I was high on pitch. So you haven't met me back in those days. I found you sober. You found me sober. The ones who worked with me from 15 on and off in the industry till 19, they knew the kind of energy I hold. I was loud, I was vocal, and I would have a point on the desk. I was not the kind because see, I'll tell you how my journey was different. In your case, somebody taught you the processes and you were in the industry inception, day one, you understood. For me, I didn't know anybody. I didn't know who's who, right? So I would fight for the creative. I would fight for the concept. I would say, this is gonna go right, this is gonna go wrong. And then eventually I learned with time, damn, this is not what a producer does. Eventually it's all about producing a piece of content and let them take the call. Maybe creative producer, you can say that. Creative producer, yeah. So I was doing a job of a creative producer, and in fact, in the movies as well, I did direct a lot of films. I did direct a lot of films with a lot of these people. Like they were independent directors as well. In fact, Anchit was interning with me back in those days, right? So Anchit was interning. So we did good content, and if I look back now, we did great projects at a very nominal cost. Because Kuzme, there were a couple of competitors in the space who were pitching. So in that 8 month period, Kuz had a lot of funding and all that, and we did a lot of content. I did more than 85% of the projects. अगर मैं 12 या 14 assignment मैं किया हूँ, तो बाकी ने 2 या 3, 4 किए होंगे. Because my costing, I didn't know the costing, right? But we did a great job. I mean, I'm happy. And that person in Kuz, I mean, she helped me go through that ladder and, work on that thing. And then in 19, and then Fabinda came to us with a film. It was a 6 second snippet film that they wanted to promote that, you can go online and you can design your kurta in a way. You can set the sleeve patterns, everything and all that. So we did a very clean 6 second film. It was a more of a teaser, and I think that back in those days, Arun was the e-commerce head over there. He was a director, I think, and then he moved to Bangalore in Capillary or something. He loved the 6 second thing, and that teaser became the main. I mean, the main
ad set. All the ads were running on that thing. So, I mean, that particular snippet, what I shot from 19 till 23, I have seen 4 or 5 brands copying the same shots, the same cuts, the same prints, the same sound design, which is good for me because brands are copying that thing. So 19 was like that. 20, we started designing the studio thing. I was at home for 7 months. This Go studio. Go started in January. I think 19. No. 20 you met me. So 19 I met you. 20 we started designing the studio in February, mid-January, and we moved into the studio. We moved our base from Okla to here, and COVID happened. Right. So I was building the next one then. No. After that. Laxya you started after COVID. After first COVID. Yeah. You did it just before COVID. Just before COVID. So I came back to the हो market. सकता है लक्ष्य ने तेरे चक्कर में बनाया हो. No, but if you remember when you were designing Laxya, I came and told you, this ambient thing could have been much bigger and from the pattern. And then eventually the gate thing happened and it came out nice. Initially, my idea was to make it smaller, and then whatever happened. But whatever happens for a good reason. Yeah. You got to believe in that gut and instinct of yours. Yeah. So 20, I was out of the market for 7 months. Completely, I was in mountains. Seriously? I was 7. अच्छा उस टाइम पे हमारी इंटरेक्शन कम नहीं थी. So 2nd October I came back. Okay. In the first lockdown, 2020. I came back, I designed the space, I did the flooring and everything, I started the studio rental. 21, again I was out of the market for 5.5, 6 months. I came back on around 5th or 7th September. I'm very much clear with the dates. I remember the dates, with the dates which changed. 27 months off the market, 21, 6 months off the market, 22 I stayed in the market, 23 it's still going on. In a way I feel proud about myself because the kind of clients I have touched, the agencies I'm working with. But for me, I'm in no desperation. For me, I seek minds. Trust me. For me, it literally doesn't matter whether it's a 1 CR project or a 50 lakh gig or a 5 lakh project. For me, I truly, deeply believe that, what kind of minds I'm going to work in. It matters to me the most. I don't care which kind of crew, how big the crew is, how big shots we are having on the floor. But as a person, as a human to human, what I'm going to learn from them. See, I'm a producer, you are a producer, there are a lot of other people from different walks of life. You are doing your job well, right? There is no second thought about it. But as a human, what kind of value you are bringing on the floor? Yeah. What you know about your life, your philosophy, your way of living, how you treat your weekdays, how you treat your weekends, how you're gonna handle your holidays, how you're handling the family, all these things collectively makes you a human. That's what I'm saying, that work is a part of life. It's not life in totality. Right? And a lot of people forget to understand the difference. We're always on the thin line. We're always in the gray area, figuring out what's right, what's wrong. And we lose the pursuit, the real beauty that what life beholds within. So yeah, so studio was never the agenda of rentals. Never was the agenda. Studio was more about feeding the ego. Studio was more about if I want to meet these A, B, C, D kind of people in the market who are actually doing well in their lives and the careers, and sooner or later I'm going to work with them. How I'm going to meet them? Because I had tried the approach when I was in Okla. And I was like, if you want to meet somebody, you literally have to follow up. Wait kar rahe ho, follow up kar rahe ho, and all that, right? And then the person will give a time, okay, we'll meet next week or next week. And then you will meet in a very, I don't like to meet outside in social, like it doesn't fit well in my brain. And we started that. And we're like, okay, I have to do something which is different. I have to make something, create something which will make everybody to come on the set, to come under this roof and do something, and we are part of the process. That's why this first studio, if you look at from the whole spectrum in India, it's the first ambient light studio which we designed. Small 1,000 square feet space, nothing big. That's why I told you. Yours was window, but you never sold it that way. Yours was window. Yours was like the gate. But the way I designed it is
I saw this studio called Stellar in Dubai. Beautiful ambient studio, and the treatment would be like uh, shooting in ambient light, playing with the sun. Yeah. So I copied that. In fact, when we did it, आदित्य ऐसा था, यही था, तो कह रहे थे छत पे भी डाल दो। मैंने कहा, So that was my second phase. हमारे यहाँ दिल्ली का वेदर परमिट नहीं करता। द एक्चुअली पहले क्या था ना, इनिशियली जब पहले हम पोलराइडर्स पे काम करते थे, रील रोल्स पे काम करते थे, ट्रांसपेरेंसी पे, तो शूट करते हुए लाइटिंग को कंट्रोल करना और कहीं से भी लाइट का लीक होना Yeah. बहुत Challenge, मैटर yeah. करता। Yeah. तो आप स्टूडियो बनाने के बाद उसको एकदम डार्क कर देते थे। तो जब से डिजिटल का वो आया, तो वो इट नीड्स टू बी डार्क एंड इट नीड्स टू जस्ट जो एरिया चाहिए वही लिट Right. होना चाहिए, वो उड़ गया। हाँ. तो And that's why digital changed the game. If Yeah. you look at I mean, 60-70% of the assignments which happen in our studio, including my personal assignments, we use sun as a source. एंड इनफैक्ट अगर मुझे नहीं पता कि हम एक क्यूब से पहले हमने कोई और स्टूडियो था जो डे लाइट वाला था, हमने चाहा कहीं ना, वो वहां से पहला। बट व्हाट हाउ यू सी, आई विल टेल यू उसमें तुमने क्या चीज अच्छी की। तो वी हैड ईस्ट एंड वेस्ट, व्हाट यू कैप्चर्ड वाज I द studied साउथ लाइट। I studied that. That's why I'm saying that I'm the first one to sell it, to market it and to brand it. आज भी मतलब सारे स्टूडियोज खिड़कियां ही हैं हर जगह। हाँ, वो तो सही। लोगों ने तो अपनी खिड़कियां तोड़ दी। अरे हमारा एक बार स्टूडियो विजिट किया, उसके बाद वो छोड़ो ना, लोगों ने तो अपने स्टूडियोज के बेसिस ही हटा दी, दूसरी जगह पे खोलने पड़े। बट दैट वाज स्मार्ट मूव। आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। No. So I remember like I scouted around 17 properties. And all 17 properties. That time Usman used to be with me. अच्छा, तुम मेरे से मिलने आया था तो you were scouting at that time? No. नहीं, you were Then no idea. You liked, I didn't have the you money. liked the place and then you decided. I didn't like the place. You liked my place. No. I didn't. I'll tell you exactly. It was too big for me that time. Try to understand. But you, हम बैठे It थे, was. अच्छा लगा। See, there are dreams, there are aspirations. It was bigger than an aspiration. Don't tell me. Trust me. Because I was never in the zone. 19, I'm telling you, I met you at 19. That was a cruise period. I shot for cruise back to back. And I thought, आपके लाइफ में अगर आप 9 महीने लगातार काम कर रहे हो, और वो 9 महीने नहीं है, वो आपके करियर का अगर उस लेवल का कंटेंट देखोगे, उसका 95% कंटेंट आपने बनाया है, वो सारा आउटडोर में हो रहा है, क्रूज में हो रहा है, तो आप ना स्टूडियो को लेके कभी नहीं समझोगे। सो when I came back and I visited Dubai again, and I was discussing a couple of things, I sat with one of the photographers and I said, this is what the studio should be like. Usman was here back in those days and Taran was here. And I was like, let's scout the areas. We started scouting and coincidentally this was the area which hit कि यार यहीं पे area और कहीं नहीं मिल रहा है. And I was lucky that there is one studio which is already having a base, that means it can grow. And every studio I would be like doing this phone thing and compass and all that. So Taran was always a silent boy. Taran would never question me what sir is doing, but Usman, कर क्या रहा है ये? What is this thing? I'm checking something. So I checked. I went back. I did the sketch, and Taran's cousin came over, and I said, "Can you just design something like this?" And I did a simulation. I did a proper simulation. I picked the coordinates from Google. I simulated my property on that. I simulated sun. Yeah, how sun would move from morning to evening from January to December. I went to the landlord. I was like, "Khidki tod that." And we broke the thing, and I think it went well. But the main agenda was I wanted to meet people, and luckily I met everybody, almost everybody. Not the top league ones, but I met good ample number of people. Happened to meet amazing talents, creative talents, younger, newer talents. जिनकी आप बात करो, बहुत talents आते हैं. We have that narrative that in the market that Go provides a lot of services and all that. In a way, yes. In a way, no. We know how to make our money. We make it smartly. No, see, that is it's a friendly talk, but that is how everybody is. आप अपना एक स्टाइल बनाओगे, आप अपना काम करने का एक तरीका बनाओगे. That is completely. Yeah. So. No, but still, there are a lot of. But I learned a lot of there are a lot of things where I find that you have your. But collectively, if you look at this market in a 1 kilometer radius right now, we hold more than 60% of the studio content in Delhi NCR. Yeah. Technically not. People from
nearby states who want to shoot a campaign or lookbook, they usually come here. That's a good thing. But see, you have to look at a bigger picture, that how you are changing the market in a bigger. See, entirely, finally, it will be, like we are one way of, all the producers. We fall into one category of, people who are here to support or to create a great content. How can we service and how can we make it comfortable for people? And okay, definitely all of us has to earn our bread, feed our people, maintain our things. So there are charges for it. But the entire intention is, if somebody is paying you whatever it's he, she, they get value for money. That is what is intent. And then why to invent same wheel again and again? If we collaborate on certain things with, and like all producers, different kind of people, they come and shoot at your place, they come and shoot at our, we provide the same facility. And it's thankfully a lot of celebrities are coming and shooting very comfortably. सहवाग आया, विराट साहब आए, बहुत सारे आए सिंगर, तो उनको प्रेफर्ड, तो होता क्या है, वो मार्केट बिल्ड होगा. So see, let's, as a India as a country has one reputation कि इंडिया में जाके शूट करने में ये होता है, people don't. Then there are good producers, we are good producers. on that particular fact that we collectively, you and me, we both, in fact, all the people, all the, I mean, the mafia of ours, the group of ours, the collectively, we always think that, we have to change the narrative that Delhi. Yeah, that's what we are fighting for and striving for. It has got quality. Yeah. So when you're coming to a country, then you're going and saying, okay, बॉम्बे में बहुत अच्छा काम होता है, फिर दिल्ली में बहुत अच्छा होता है, बेंगलोर, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम, आपने अच्छा काम किया, आपके शहर में अच्छा काम हो रहा है, आपके देश में अच्छा काम हो रहा है, आपके, दैट इज व्हाट इज नीडेड. इफ everybody is coming, similarly if we are going to going abroad and or going to other city, if we find right kind of people and they provide us whatever services provided, we definitely know इसने हमें ज्यादा चार्ज किया, इसने हमें कम किया. ज्यादा और कम तो बाद में आता है, पहले ही आता है कि हमारा काम कैसा हुआ. राइट, ट्रू, है ना. ट्रू. तो आई थिंक the what now as like for us to move to next level would be that we collectively create some content, the kind of content we want to create, express ourselves, and give industry whatever is now needed. Going back to, now this is the current scenario of the market, now going back to those days, 90s, late 90s, tell us more about how pre-digital era, hardcore, we are shooting on films, constraints were there, challenges were there. Right now, we trust me, we have everything with a click of the button. We Google everything, we search everything. I mean, you can see, like, in I made a call and got the memory card. So everything is being Dunzo hai, so Blinkit hai. Funny, any interesting thing on any of the assignments which you found different, unusual, but it was like worth remembering in the print days? I think each and every moment was worth remembering. But there were so many things you said. So, एक कैंपेन डिजाइन हुआ, फिर बात हुई कि so and so will do this campaign. सब बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे. When we were talking about advertising, there were नहीं प्रबुद्ध आकाश, दाप्रदीप, there were a lot of, let's, किसी का नाम रह जाएगा तो फिर पता लगेगा डांट पड़ रही है. आप शूट करने गए हैं, सब बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीथिंग वाज selective. There were only few. You need to go to get this thing, then there this person is there, that person. अब शूट पे आप पहुंचे, सेटअप होने के बाद एक पोलराइड निकलेगा, सब होने वो पोलराइड को देखने के बाद आपको पता है कि अब इसमें ये मेरा फ्रेम सेट हो गया, क्रिएटिव ने देख लिया. किसी जो अगर कोई क्लाइंट आया तो क्लाइंट बहुत कम आते थे उस टाइम पर, आते थे तो देख लिया, हो गया. अब उसके बाद सिर्फ फोटोग्राफर को पता होता था कि वो क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता. Right now it's capture one in like 100. Everybody is इसका रेड अच्छा लग रहा है, ब्लू, इसको ऐसे कर दो. Everybody is creative right now. At that time, and there's nothing wrong with it. At least आपको उस दिन उसी टाइम पे पता है कि भैया हो गया कि नहीं हुआ. उस टाइम पे तो ये होता है वो शूट हो गया, उसके बाद वो रोल चले गए, वो प्रोसेस होके आएंगे, उनकी कॉन्टैक्ट शीट बनती थी या ट्रांसपेरेंसी इसको लगा लगा के देखा जाता था कि भैया, और कितने क्लिक आप कर रहे हो. एवरी क्लिक वाज कॉस्टिंग.
Because it's a कितने वो लोग गए, फिल्म हो रही है ना, yeah. और मैंने तेरे को बताया था अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी सारी गलती वो प्रोसेसिंग यूनिट की That was होती थी. इनफैक्ट एट दैट टाइम sometime it used to happen. So I remember some of the very intelligent and renowned photographers, वो दो अलग अलग लैब में भेज देते थे कि भैया अगर एक का केमिकल गड़बड़ हो, कभी कभी तो सच में भी होता था, दूसरा एक्सक्यूज भी था. मुझे ये भी मालूम है किस किस ने एक्सक्यूज में मरा, केमिकल खराब था. Project signed off. बट एट दैट टाइम यू नो लोगों को ये समझाना है कि ये स्टिल शूट हो रहा है, ये भी चैलेंज था. उनको लगता था ये कौन सी फिल्म बन रही है, भाई स्टिल शूट है भाई. या People are not that aware. yeah, Yeah. एंड लोग तैयार नहीं होते थे. टैलेंट बहुत कम था. आपको लोगों को ढूंढना, स्पेशली बच्चे और एजेड पीपल, तो मतलब हमें ढूंढ के ही लाने पड़ते थे. बट गुड फॉर. और मार्केट की मतलब अब तो आप गूगल सर्च कर सकते हो ये फलानी चीज कहाँ पे मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है. मतलब देयर वाज अ टाइम मेरे को टोनिक हमें सुंदरनगर वो मार्केट है उसका भी नहीं पता था. जब पहुंच गए तो देखो ओह ये तो सारा प्रॉप यहाँ पे पड़ा है भाई. Right. अब तो यू कैन सर्च एनीथिंग, यू कैन ऑर्डर. अब तो लोग घर बैठ के प्रॉप्स और चीजें ऑर्डर कर लेते हैं. Right. But there's nothing wrong. It's really beautiful now. The kind of things which are happening. अब वही है टेक तो भाई अब आएगा ही. Information is accessible. I mean, it's You can approach anyone, anybody. yeah. So, I mean, digital आया उसके बाद. Uh, तो any photographer who did a breakthrough कि यार digital again adopted the first gig. तो शुरू में there was some you know people not very sure. There was a lot of resistance. Yes. Few people were slightly हदेश जी और ऐसे कई जन थे जिन्होंने, और जो रेजिस्ट भी कर रहे थे बैकएंड में रिसर्च भी कर रहे थे क्या हो रहा है. सो एरा डो एरा ऐसा हुआ. अगर धनंजय की एक टाइम था, लेट मी गो बैक एंड स्टार्ट की, एक टाइम था कि एजेंसीज में वो स्प्रे आर्टिस्ट और वो नो वो होती थी जिसमें रबर सोल्यूशन से चीजें चिपक के लेआउटिंग हो रही है और एजेंसी बड़े बड़े लेआउट बना के प्रेजेंटेशन को लेके जा रही है. बिल्कुल. आर्ट डायरेक्टर मतलब वो ब्लैक बुक रेफरेंस के लिए ब्लैक बुक होती थी, या वो स्केच करते थे सारी चीजें, ठीक है, कंप्यूटर का रेफरेंस या यहाँ से पिक्चर निकाल के नहीं होती थी, वैसे चीजें होती थी. कंप्यूटर्स आ गए, सिस्टम वर्क आ गया, चीजें आ गई आगे. अब आ गया डिजिटल. तो जो प्रिंट शूट होते थे जब वो डिजिटल 6 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल के बीच में थोड़ी बहुत चीजें होनी शुरू हुई. यंगर फोटोग्राफर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, and people like Hadeji and many other people also started adapting. They started doing system work, doing some amazing shots with a lot of Photoshop and mixing things like that. That started. फिर जिन्होंने कुछ तो बहुत ही रेजिस्ट करते थे वो दे kept on following the old school. For some time till 22 मेगापिक्सल के टाइम तक तो दोनों चीजें पैरेलली हो गया. 20 जब 22 मेगापिक्सल आ गया और वो आउटडोर्स और उसके बाद 12 में हमने एयरटेल चारों के साथ 12 मेगापिक्सल में शूट किया था लद्दाख जाके, और उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे. Which year was it? 6. एयरटेल मैंने इतना लंबा टाइम किया ना, लाइक जैसे तेरे कूफ था ऐसे एयरटेल था, मतलब बहुत किया. तो ये रहा होगा 2007 8 6 8 ऐसे. After that ESL. 2005 to 2010 के बीच में रहा. मेरे को वैसे डेट से ऐसे याद है थी. It was a hardcore digital campaign. It was a hardcore digital campaign. फुट कैंडल्स फिल्म कर रही थी, साथ में हम स्टिल शूट And we used to have this capture one laptop पे sync उस time पे tethering. नहीं ये नहीं आया था. It's like you shoot, you look at the screen only and this is it. Initially it was like that. हाँ. अब ठीक से याद नहीं, पर हाँ फिर लैपटॉप पर बड़ी क्विकली हुआ ये सब. स्पेशली जैसे ही वो फेज 1 का वो 22 मेगापिक्सल है, देन इट लॉट ऑफ थिंग चेंज्ड. बहुत स्पीड से हुआ, शायद बाहर हमसे पहले हो गया होगा. तो मतलब बड़ा अच्छा, बड़ा फास्ट ट्रांजिशन. और बट देन लाइफ चेंज्ड. फिर तो गूगल अंकल आ गए. Then you know everything. Digital changed the game, scenario. Yeah, like completely. it became accessible to become an artist. I mean, I remember if I go through and I talk to multiple people from who have seen a bit of the
print era, as in the film era, and then moving to the digital. Right now, a 16 or 17-year-old kid, if somebody thinks that photography is my calling or filmmaking is my calling, can learn it. anywhere in the country, the person is sitting and can Google the procedure and the process of Take their master classes. Yeah. See, in fact, if I'm talking about at that time, you know, कि लाइन प्रोड्यूसर का टर्म इन रहे फिल्म में रहे होगी, स्टिल में मुझे तो नहीं पता था। तो हर बार कहीं जाते थे तो वहाँ किसी ना किसी को ढूंढना पड़ता था, खुद ही परमिशन लेना। डिपार्टमेंट्स को भी नहीं पता होता था कि कौन सी परमिशन है, कौन सी नहीं है। मतलब टॉकिंग अबाउट 91, 95, 98, मतलब उस बीच में, या शायद हमें को नहीं पता रहा, लेकिन धीरे 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 आपको हर जगह लोग मिलने शुरू हो गए। कितने लोगों को, जैसे दिल्ली में लोकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए कोई सेपरेट जना नहीं था, लोकेशन मैनेजर नहीं थे। तो कोई कहीं बैठे हैं, हमारे भाई ये दिला दो, अच्छा तुम प्रॉपर्टी डीलर या वो सीमेंट की शॉप खोल के कोई बैठा, उसके या तुम जानते हो फार्म हाउस वालों को, फार्म हाउस में एंटर करने के लिए, या हम कार्ड डाला है। तो देयर वाज सम स्ट्रगल। नाउ यू हैव एवरीथिंग। सो देयर वाज अ टाइम जब स्टाइलिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, कोऑर्डिनेटर। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटर ने कि नहीं, अब ये वी आर प्रोडक्शन। स्टाइलिस्ट की चीजें, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट एंटर हुआ। करते करते नाउ तो वी हैव एवरी डिपार्टमेंट। आई थिंक वी आर एट पार विद हॉलीवुड दैट वी हैव एवरी डिपार्टमेंट नाउ। यू नो, you have a production designer, you have a art director, you have different people working. So working now, again the challenge would be like, you must be knowing more about it, like AI or this up. There'll be so many new challenges. So I think in any industry you need to adapt to whatever the circumstances and don't bring out something new. Bring out, like 2001 में, for some strange reason, just because of some connection, रमन के क्लास में बताया ना मेट था, तो मैंने ऑफिस के साथ स्टूडियो ले, एक्चुअली स्टूडियो ले लिया है एज अ प्रोड्यूसर। नहीं तो फोटोग्राफर के पास ही होते थे, और उसमें एक ऑफिस बना लिया और थोड़ा बड़ा बना दिया, जो फोटोग्राफर होते थे R फॉर्मेट वाले में। वहां से somehow the other, see, it was never necessity that you need to have a studio for being a producer. You can be a great producer without having it in an office if you have your connects, if you want to work, and if you provide. I mean, these days it's all on a phone call. Yeah, but why I started that at that time, I don't know. Me and Tony both were there. रमन और उसके ऐसे कर लो आप बड़ा ऑफिस होगा। It started, what happened is that we got convenience कि यार अच्छा अपने पास एक बैकअप है जहाँ आपका सेट सामान चीजें ये वो, अच्छा चलो एक शूट करना है, तो वो एक बैकएंड सा बनना शुरू हो गया। एंड इनफैक्ट उसके बाद हमेशा पूरे साल टाइम ही मेरे पास कोई ना कोई, फिर मैं वो गार्डन ऑफ एसेंस चला गया, वहाँ पे भी 2 फ्लोर थे। ऋतु का स्टूडियो खुलवाने के बाद फिर मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके लेट्स नॉट टेक इट। 2019 में नहीं केम यार, ये बनाया, इसमें हमने वो डे लाइट वाला कंसेप्ट डाला, हाइट दी। उसके बाद सबको लगा शायद यही एक ऐसा बिजनेस है कि जो, बट you need to break the myth that you don't make money on the rental business. You don't make profits. You don't make profits. You make I mean, it's a break even. Yeah. I mean, if it's hitting you break even, it's fine, because it's, see, what happens is the moment you start hitting break even, हमारे एक वो तुम भी आ गए, चलो फिर भी मार्केट, फिर या तो ये कहो कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो भी मार्केट बन जाता है। यू नेवर नो, अगर स्टैंड अलोन में शायद वो इतना, तो वो मार्केट आपके पास आता ही रहेगा। एंड देयर इज समथिंग विद द मार्केट, स्पेशली फॉर रेंटल थिंग्स, पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। कोई ना कोई नया, जो भी नया आता है वो कोई छोटी सी नई चीज बनाते हैं, दे गेट अ डिफरेंट बैकग्राउंड, समथिंग दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट द मेन क्वेश्चन इज, the main intent is to create some great content, get together, work in a team and create some great content, right? You know, and I mean, otherwise, I mean, what are you gonna do with the resources you have, right? I mean, trust me, if you look at the kind of resources we share together right now, and I mean, everybody knows in and out of both of our teams and all that.
I think we can create, and which we are discussing as well, like Yeah. the kind of experience we want to bring in. Because I don't think, See, one thing we can do is, like, if like, I know you especially, you've been working with a lot of producers very closely, Max and all. Is that break a myth? My relationship with all the producer people who think is good. yeah, There must be some competitor, but there is no bitter. no The हाँ होगा which is healthy. competition. हाँ, bitter नहीं है. अब scene, if we break, created this prop shop, right? The studio prop shop is available to anybody, Hmm. to other Everybody, producers also, everybody, yeah. है ना? Yeah. Now how do see, you so many time तेरा एक touch point है कि respect for, from spot to producer वाला है ना? But I think पहले हमें respect करना पड़ेगा each other, Yeah. then the industry will respect. And there is a lot of respect. I'm not saying there is not And respect. honestly speaking, I mean, it's not like that we are asking for it. We have earned it in a way, Yeah. right? So the kind of, I mean, yes, there is a narrative, and I discussed with you on earlier days, it's a production is a thankless job. I said, no, it's not a thankless job. It depends upon how you see it, Just a job. right? You may call it thankless. You bloody unplug the cord in the morning, on the shoot day once, you will get to know your worth. Ah. Because I think we have kept it too open, too flexible, and we have been too submissive. That, I mean, see, if we shoot abroad, there's a different mindset altogether. Like, I mean, if it's like a, let's say, 20,000 pound or 30,000 pound shoot outdoors, a photographer will be helping a stylist to unpack or pack. Same, the makeup artist, the hair artist would help the photographer to pack the lights, and it's a team job. It's a collective job. Maybe we are entitled ones in India, but See, I'll tell you, वो problem क्या है कि आपको एक अच्छा काम करना है, आपको टीम चाहिए, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, डीओपी हो, आप उनको कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि दे लुक अप टू यू एज अ प्रोड्यूसर दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सम दे आर रीजनेबल, समटाइम दे अंडरस्टैंड, समटाइम whether is not in our hand we can calculate, but even for that you are responsible that everything goes fine. Okay. yeah. Now, when we are here working in this industry, we have to have our integrity first, as producers to producers, coordinator, as a team, and then rest of the market will respect you. Right now, क्या है कि to negotiate with you, यार धनंजय, आशु तो, यार आशु वो तो, दैट फिर आप क्या करते हो, क्वालिटी पे, पैसों पे कंप्रोमाइज करना शुरू करते हो. जब वो हम कंप्रोमाइजिंग स्टेज में आ जाते हैं एज ए प्रोड्यूसर, देन यू कैन नेवर क्रिएट अ ग्रेट, यू कांट गो टू डिज्नी. I personally believe that, the kind of experience I had, I technically I vet the clients. I evaluate them. Before I take the project, I just look at all the scenarios. What are the possible scenarios if we take the project forward? Because, if we are fighting for the client on all the fronts to produce that piece of content in that particular, say, X amount of budget, the client has also to fight for us in a way, in the internal system or with the agency or with the management. Because what happens most of the times is like, अच्छा हुआ तो सब क्रेडिट लेने आ जाते हैं, बुरा हुआ तो प्रोड्यूसर की गलती है. See, another thing is that, even as a client and an agency, you want a great product, okay, and you want a masterpiece. You have to involve that kind of craftsmanship. Yeah. You want a great jewelry, आपको चाहिए तो आपको सोने की ज्वेलरी, पर आप पे करना चाहते हो चांदी के लिए, you will get चांदी plated with you. Yeah. तो No, I recently heard it from this DOP. Is a good friend now. He just did one of the assignments. He said कि यार, people are expecting us to, give us Marilyn Monroe, and the budget is not of that. It's a, yeah. it's a very If you look less at, budget. can you see, will you find a किसी जॉब में किसी प्रोड्यूसर को या किसी कोऑर्डिनेटर को, किसी को कुछ नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, होता है, 10 में से 5 में से एक जॉब में होता है. बट कोई असाइनमेंट, कोई जॉब पिक कर रहा है और उसको ये पता है कि मेरे को इसमें पैसे नहीं बने तो उठाएगा नहीं. तो पर आपको जो भी हम कॉस्ट देंगे, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हम उसको कॉस्ट को ऐसे एनालाइज करेंगे कि इसमें इतना खर्चा होने वाला है. राइट. अब कोई आता है दूसरा, तो आप क्या करते हो,
अगर मान लो आपने बोला किसी को कि धनंजय ने बोला कि इसमें मैं 10 लाख रुपए के खर्चा होगा, मैं ऐसे कैमरा लूंगा, ऐसे ये फोटोग्राफर होगा, ये डीओपी होगा, बोलता नहीं मेरे पास 5 लाख का बजट है, तो अब वो टैलेंट हटाते हो, आपका कैमरे का वो कम, इसका एक्टर का सारा को अपने घर से जेब से तो देते हैं। तो प्रोडक्ट किसका है एज अ क्लाइंट या एजेंसी मेरा है। अब आपको यू मे गेट अ गुड प्रोडक्ट लाइक गुड प्रोड्यूसर qualities even if you are giving it a product, I'm giving it, we are giving it in 5 lakh rupees only, but we'll give you 5 lakh mein the best possible product in 5 lakh, and then we'll give you। अच्छा गैप कहाँ आता है, ये हमारी भी कुछ चलती है कि जहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर चीज़ें लोगों को क्या होता है कि वो इंटेग्रिटी नहीं रहती, मौका लगा ना तो अब सारी चीज़ें, प्लीज डोंट माइंड, मतलब तुझको भी पता है इंडस्ट्री का, और डोंट माइंड कि अब मैंने ये असाइनमेंट ऐसा मैं ही रख लूं ना, मैं मॉडल कर दूं ना, मैं मेकअप कितना बड़ा, तो इतना प्रोड्यूसर्स के बारे में पहली फोटोग्राफर बोलेगा या डायरेक्टर बोलेगा, कैरेक्टर तो चीजें या मेकअप आर्टिस्ट सब पैसे कमाते हैं, प्रोड्यूसर बोलेगा तो ये पैसा बना। हाँ, it has happened. Although it is प्रोड्यूसर का राइट कि पैसा बनाए तभी चला पाएगा। Recently happened with one of my clients because similar treatment, same shoot is happening, and some other production house is doing it, and it's a double the budget of what we quote them for the same treatment. If we do it, we'll do it half. It's not about half the cost because we understand, what's the optimal solution for that thing. And I told the client upfront, I said, the moment you will try to hire the talent which I have taken on board for your projects in the past, they will feel cheated. जबकि आप जाके उनको बोल भी दोगे कि यार ये बड़ा असाइनमेंट है, वी विल पे यू मोर, बट दे विल फील चीटेड। दैट मींस एज अ प्रोड्यूसर आई फेल टू गेट देम दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हिच आई कुड हैव गॉटन देम एट फर्स्ट प्लेस। सो आई अंडरस्टैंड, बट नहीं वो भी तो देखो, ये ना वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कि कुछ जने जो यूसेज के बारे में नहीं बोलते, कुछ टैलेंट है जिसको नहीं पूछते, कुछ हैं जो बड़े पर्टिकुलर हैं। हम आपको और मेरे को आज नहीं पता होगा, जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमें आइडिया है कि लुक में कॉज दिस, एक्टर में कॉज दिस, हमें पता है कि मेरा फोटोग्राफर, मेरा डायरेक्टर, मेरा डीओपी, मेरा है, अब हमारे डेज कि हम ये 10 दिन का असाइनमेंट है, ये 1 दिन का, ये 3 दिन का है, आप एस्टिमेट उसके बेस पर। देन सम टाइम द डिमांड गोज, आपके लोकेशन में पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, कभी आपको लोकेशन में पैसे बच जाते हैं, टैलेंट में ज़्यादा लग जाते हैं, बट आपको ओवरऑल पता होता है कि मैं ऐसे करने वाला हूँ। ओके, some assignments you make better money and some assignments you don't make it. तो हम as a producer, हमारी एक nature है, like ना, I told you that we are somebody, even you will be that, and all of them will be there. If they are successful, they are somebody who are solving problems. PSP, वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो क्रिएटिव ने मुझे बोला यार आजो भाई, मैं तो ना ये वाला आपके साथ ना, मैं इसमें बहुत भसड़ है। भाई हमें बजट अगर है तो रिजॉल्व इट एंड डू इट नाइसली, देयर इज नो बजट। हमें उठ के सवेरे जल्दी जाना, उस लोकेशन पे पहुंचना, नई लोकेशन देखना, कैरेक्टर्स को हैंडल करना, आई थिंक ऑल ऑफ अस लाइक But so this is the current scenario right now. Tell me more about the journey. Okay, so this is digital started and photographers started shooting and all that. We were talking about the change. Okay. 20-30 years back. Now, what's the major change you see in the mindset of clients, agencies altogether? See, client agencies, generation gap. Know the term generation. So, I think clients, every time, the whole or entire thing is always about, youngsters. Okay, the whole advertising, whole campaigning, mostly is focused on youngsters. That's why I'm 16. अब यंगस्टर्स का जो माइंडसेट टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ जैसे जैसे बदलता चला गया, वैसे वैसे हमारी एडवर्टाइजिंग, फिल्मिंग, कल्चर, एवरीथिंग चेंज्ड। ओके, अब आई एम नॉट अ ग्रेट एनालिस्ट कि मैं बताऊं वर्ड में ये हुआ, बट स्टिल आई थिंक कि पहले का अटेंशन स्पैन और अब के अटेंशन स्पैन में यू आर द वन विद नंबर्स। तो पहले एक कैंपेन होता था, वो काफ़ी टाइम चलता था, मैगजीन में भी है, न्यूज़पेपर में होर्डिंग लगे, तो कोई ऐसा नहीं होता था। मैं फिर जब थोड़ा आगे पहुंचा तो 1 साल की यूसेज पे आने शुरू हो गए, यूसेज वाला टर्म शुरू हो गया। अब बोलते हैं 3 महीने चलाना है कैंपेन, 1 महीने का ही है, ओनली डिजिटल, इट विल बी वंस फॉर फ्यू डेज। सो द जिस तरीके से कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, उस तरीके से कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो आई डोंट वांट टू ब्लेम अस or anybody, and neither I'm blaming anybody. This is the need of the. So what has happened is there is so much of fast.
It's quick. It is quick. Yeah. You blink it, you want to. अगर आप अभी मुझे को 5 मिनट में देके जा रहे हो तो देके जा रहे हो, नहीं तो फिर मेरे को नहीं चाहिए. Yeah. Right. So that is the shift which is happening in advertising also. Shelf life has gone down. जब कोई चीज होगी, there is a term called charismatic bar. You know, I meet you once, twice, and then we start loving Amitabh Bachchan. Okay, initially we'll whatever people had to say, had to say. It's like the time, everybody, once you are there, spending your time. कैम्पेन्स की भी यही पर्सनैलिटी थी पहले. आप उसके कैरेक्टर चीज़ों से रिलेट करते थे और वो लॉन्गर टाइम चलती थी. Right. अब तो It has changed, yeah. Because if you no, there's nothing wrong with it. It's good. yeah, because Now see, you have everybody is celebrity nowadays. plus, I mean, that time I personally feel that there were limited number of brands in every category in India, be it FMCG, be it automobile, pharmaceuticals, anything right now. But if you look at right now, I mean, if I look at the current generation right now, um, everybody wants to look exclusive. I mean, see, there was a time I remember like if a kid would buy action shoes, everybody would buy that action shoes, that pair of shoes. Right now, if I am wearing Dunk Lows, the other person would not like it. Would wear maybe Essex, or somebody would buy something from the Reebok version or from the Adidas version. Everybody wants to look exclusive. And same goes for apparel as well, the fashion per se thing. People love these new homegrown labels, those new brands, those streetwear brands. They want to look different. And I think that is also one of the reasons because uh, people want to look different. That's thing, and obviously it does impact a lot from the content side as well because those times are gone. Those times are gone with that 60-80 feet holding, with that TV commercial of 45 second or 30 second or whatever, 60 No, seconds. I'll tell you, it may have the impact now also, but do we need that impact? That Yes, is the question. because see, it's I mean see, we feel it. क्योंकि politicians के कटआउट आज भी बड़े लगते हैं मेरे भाई. That I don't deny that, but see, if you look at uh, how a piece of content is consumed, who is consuming that Yeah. content, it's directly proportional to multiple factors. Let's exemplify how much relevance that brand is having, that shelf life which you're talking about, is it will directly impact or be proportional towards who is the which generation, which age group is having that purchasing power, right? I mean, I personally feel the decision making for a normal middle class person who is buying a car worth in between a range of like, let's say, 5 to 9 lakhs or 8 lakhs, it's the father who has to pay. But it's a 16-year-old, 14-year-old, or 18-year-old son or daughter, or the kid, who will say, Dad, this is what I saw and this is what I want to buy. Because, they're watching these YouTube influencers, these bloggers, looking at the features. And I think that has changed. I mean, remember, like back in time when I got my car, my father gave me a car. No much. See, again, it's all about information. We had a limited information. So back in those days, if you wanted to buy a car, which is one of the commodities after home in Indian mindset. Back in those days, car was a luxury. Now it's a necessity. First priority, then comes the car. Now imagine 20 years back, buying a car was like you pick an expert. Who is an expert? Expert is the one from your neighborhood or from your relatives who has already bought a car, right? Now it has changed. 20 years down the line, back in 23, we are sitting a 16-year, 12-year-old kid sitting at home can evaluate 10 different cars. We're asking kids now. Sure. Which one do you? This is the right fit for us. Yeah. So it has changed. Now, I mean, technically, they are influencing the ones who have that purchasing power, be it them themselves, if they are in mid 20s, 30s, whatever, or their parents, right? So I think that is also one of the biggest things. If you look at digital, why brands are spending money on digital is like because that's a need of an hour. If you're not on digital, you are dead. Yeah. Right? I mean, there are couple of brands who work in the old school methodology, but thing is that you need to have that kind of strong monopoly, that niche. But how many brands have that monopoly? If I look at all the parent companies right now, be it in India or abroad, if you study all the bigger parent groups,
They started with a particular segment, be it automobile, pharmaceutical, real estate, or whatever. But now you can see they are expanding their verticals. They're into fashion, they're into furnishing, they're into export, they're into manufacturing, they're into some mining, whatever. So every bigger group is expanding into different verticals to be safe, right? Because And they know that we are number one today, we may or may not be number one tomorrow. still, creating a brand is still as valuable as it was. Now it is more. Once you have a brand, then you can expand to whatever you Yeah. want to. But, and I will not say even for this younger generation that they would not like what happened to Fevicol. इन्होंने भी देखी होंगी Fevicol की ads. Yeah. So Pandey did it creativity will never go out, good work will never go out. Now the need of the, like you're saying, is it has become like, हम पहले जब छोटे थे, मैं बोला था जल्दी डिसीजन मत लिया करो, सोच समझ के डिसीजन लो, वर्सेस right now. Yeah. That is the time. Spontaneous. Yeah. Spontaneous. That is needed. Because by the time, अब जो campaign, as per my knowledge, जो चीज़, जैसे हमारा वो बेटा, जो चीज़ थोड़ा टाइम खिंच गई, तब तक तो उससे दूसरा वाला प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है. Yeah. Yeah. आज आपने अगर वो शूट जो आपने प्लान किया है, जो आइडिया आपने सोचा है, और आप उसको एग्जीक्यूट करने में अगर टाइम लगा देते हो, चाहे वट एवर मे बी द रीजन, उसके बाद तो दो और चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं. तो योर आइडिया is as good as you implement it, or somebody else will implement it. Yeah. And Because then access to information, yeah, knowledge base, it's and speed. yeah. I think there. what has changed, what you were asking, is that the kind of decision making and the quickness, the fast. So earlier, अगर आप जल्दी डिसीजन ले रहे तो बोलते थे कितना क्या बोलते उसको टर्म, हाँ, यू आर डूइंग इट, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो. अब हाँ, और अब अगर तुमने थोड़ा सोचा, थोड़ा समझा, तो तुम्हें लगता है तब तक तो गाड़ी निकलेगी. हाँ, so that, I mean, that brings to my one more question is, how do you adopt as a producer? You have worked in that zone when you used to do 2 shots a day. One Shot a day. I don't know. I don't want to say. Still that scares me, but I great respect for somebody came and said, I'm seriously, he said, photographer and a very good gentleman, new, young. तो had some problem, वो गाड़ी का शूट करना तो कुछ प्रॉब्लम आई, तो finally came up to me, देव शर्मा लेके आ गए. And we being we as a producer, there is something very good about that. We want to solve that person. There are two reputation. एक producer है तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे बनाएगा, और दूसरा ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. अब आप अपना बेसिक तो छोड़ ही नहीं सकते. तो I said okay fine. So gave him some solution in that night, whatever I could, and but I asked कि भाई कितने शॉट करने वाले? He said I'm doing 20 shots a day. In automobile. And I was shocked, but that's how people are. And there's nothing wrong with it. If they're doing good work, but if they're doing more work, what is, I don't know how much he did, and मैंने देखा नहीं है, but I'm very sure because he was shooting for the same client again. So means he's doing whatever is needed, and he wanted whatever. So but I did that. But I believe now, I would like to learn from that kind of people, boss. हम इसको कैसे, how do I want to learn from you? Most of the time I come, people think that you are taking ideas from this. I also come to take an idea. What are the things? How things are moving? What should we do? Yeah. And that is what is needed. You need to. And अभी भी ये होने वाला है. The people. So there is no competition. The people, if we do things in nicely, in a different way, if we are serving the market, if we are getting together and helping and supporting each other, we have a future. Otherwise, वो चींटियों की कहानी सिर्फ हमारे लैंडलॉर्ड्स के लिए नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स के लिए भी है. ये सारी चींटियों की चटनी बनेगी अगर वो उस पत्ते से बाहर नहीं निकलेंगी. We have to expand, nothing else. We are here, like you said, we are here to have fun. Do some great work, move to the next level. इतने साल से हम साउथ की इंडस्ट्री उड़ गई, कन्नड़ उड़ गई, दिल्ली नॉर्थ से अभी तक हमारी इंडस्ट्री अच्छी है, बहुत है. फिल्म सारी इन्फ्लुएंस नॉर्थ से ही हैं, बहुत सारी हैं, बट दिल्ली में बाहर से प्रोडक्शन हाउस आके
बाहर से क्या मतलब फिल्म जो कर रहे हैं वर्सेस दिल्ली से क्या कंटेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ग्रेट माइंड यार वी हैव बेस्ट द डिजाइनर्स वी हैव ग्रेट क्रिएटिव पीपल हियर I think we are at par with anything the kind of facilities and things we have. We have to get together and make up. True. So that's why that I think that the जो हमारे initiative में prop shop है, that is one of the thing where we are Yeah, making. correct. So we have so many floors now. Anyways, ठीक है. It was really nice. Always nice meeting to you. Thank you so much. Thank you so much.